1. Concrete का compressive strength इस दिन पर measure किया जाता है. At how many days is the compressive strength of concrete measured? A. 3 दिन days. B. 7 दिन days. C. 14 दिन days. D. 28 दिन days. 3, 2, 1. Answer D. 28 days. Explanation. Concrete की standard strength 28 days curing के बाद check की जाती है. 2. Cement का मुख्य compound कौन सा है? Which is the main compound in cement? A. Lime, चूना. B. Silica, silica. C. Alumina, alumina. D. Gypsum, gypsum. 3, 2, 1. Answer A. Lime. Explanation. Lime CaO cement का major constituent होता है. 3. Surveying में chain की standard length कितनी होती है? What is the standard length of a chain in surveying? A. 10 meter. B. 20 meter. C. 30 meter. D. 40 meter. 3, 2, 1. Answer B. 20 meter. Explanation. Metric chain की standard length 20 meter होती है. 4. Beam में maximum bending moment कहाँ होता है? Where is the maximum bending moment in a simply supported beam? A. Top. B. Center. C. Quarter span. D. Support. 3, 2, 1. Answer B. Center. Explanation. Simply supported beam में maximum moment center में होता है. 5. Water cement ratio किसे affect करता है? Water cement ratio affects what? A. Color. B. Strength. C. Shape. D. Weight. 3, 2, 1. Answer B. Strength. Explanation. WC ratio बढ़ने से strength कम हो जाती है. 6. Brick की standard size India क्या है? What is the standard size of brick in India? A. 190 by 90 by 90 mm. B. 200 by 100 by 100 millimeters. C. 180 by 80 by 80 millimeters. D. 210 by 110 by 110 millimeters. 3, 2, 1. Answer A. Explanation. IS code के अनुसार standard brick size यही है. 7. Unit of stress क्या है? What is the unit of stress? A. Newton. B. Pascal. C. Joule. D. Watt. 3, 2, 1. Answer B. Pascal. Stress equals force area. Unit Pascal होता है. 8. Plumb bob का use कहाँ होता है? Where is plumb bob used? A. Leveling. B. Vertical alignment. C. Measuring distance. D. Drawing. 3, 2, 1. Answer B. Explanation. Vertical line check करने के लिए use होता है. 9. Aggregate का function क्या है? What is the function of aggregate? A. Strength देना. B. Cost कम करना. C. Volume बढ़ाना. D. All the above. 3, 2, 1. Answer D. Explanation. Aggregate strength B देता है, cost कम करता है और volume बढ़ाता है. 10. Curing का main purpose क्या है? What is the main purpose of curing? A. Dry करना. B. Strength बढ़ाना. C. Color बदलना. D. Shape देना. 3, 2, 1. Answer B. Explanation. Proper curing से hydration होता है और strength बढ़ती है. 11. RCC का full form क्या है? What is the full form of RCC? A. Reinforced cement concrete. B. Reinforced concrete cement. C. Ready cement concrete. D. Reinforced clay concrete. 3, 2, 1. Answer A. Explanation. RCC equals reinforced cement concrete होता है. 12. Concrete में steel क्यों डाला जाता है? Why is steel provided in concrete? A. Compression के लिए. B. Tension के लिए. C. Color के लिए. D. Weight बढ़ाने के लिए. 3, 2, 1. Answer B. Explanation. Concrete tension में weak होता है, इसलिए steel tension resist करता है. 13. Concrete किस में strong होता है? Concrete is strong in which?
A. Tension. B. Compression. C. Shear. D. Bending. 3, 2, 1. Answer B. Explanation. Concrete compressive forces को अच्छे से resist करता है. 14. Steel किस में strong होता है? Steel is strong in which? A. Compression. B. Tension. C. Shear. D. None. 3, 2, 1. Answer B. Explanation. Steel tensile forces को resist करता है. 15. RCC beam में steel कहाँ provide किया जाता है? Where is steel provided in RCC beam? A. Top. B. Bottom. C. Middle. D. Side. 3, 2, 1. B. Explanation. बीम के बॉटम में टेंशन होता है इसलिए स्टील नीचे दिया जाता है. 16. स्लैब में मेन reinforcement कहाँ दिया जाता है? Where is main reinforcement provided in slab? A. Top. B. Bottom. C. Side. D. Center. 3, 2, 1. Answer B. Explanation. स्लैब में टेंशन नीचे होता है इसलिए स्टील बॉटम में होता है. 17. कॉलम में लोड किस प्रकार का होता है? What type of load acts on a column? A. Tensile. B. Compressive. C. Shear. D. Bending. 3, 2, 1. Answer B. Explanation. Column axial compressive load carry करता है. 18. Footing का main function क्या है? What is the main function of footing? A. Load बढ़ाना. B. Load distribute करना. C. Height बढ़ाना. D. Weight कम करना. 3, 2, 1. Answer B. Explanation. Footing load को soil में distribute करता है. 19. Minimum grade of concrete for RCC, IS code क्या है? Minimum grade of concrete for RCC as per IS code. A. M5. B. M10. C. M15. D. M20. 3, 2, 1. Answer C. M15. Explanation. RCC के लिए minimum M15 grade use होता है. 20. Cover का purpose क्या है? What is the purpose of cover in RCC? A. Decoration. B. Protection of steel. C. Weight बढ़ाना. D. Strength कम करना. 3, 2, 1. Answer B. Explanation. Cover steel को corrosion or fire से बचाता है. 21. Stirrups का use किसके लिए होता है? Stirrups are used for A. Tension. B. Compression. C. Shear. D. Decoration. 3, 2, 1. Answer C. Explanation. Stirrups shear force resist करते हैं. 22. Beam का main function क्या है? What is the main function of a beam? A. Load carry करना. B. Load transfer करना. C. Decoration. D. Height बढ़ाना. 3, 2, 1. Answer B. Explanation. Beam load को slab से column तक transfer करता है. 23. Slab किस प्रकार का element है? Slab is which type of element? A. 2D. B. 1D. C. 3D. D. None. 3, 2, 1. Answer A. Explanation. Slab 2D element होता है. 24. Column किस प्रकार का element है? Column is which type of element? A. 2D. B. 1D. C. 3D. D. None. 3, 2, 1. Answer B. Explanation. Column line element 1D माना जाता है. 25. Concrete का unit weight कितना होता है? What is unit weight of concrete? A. 20 kN units per meter cubed. B. 24 kN units per meter cubed. C. 30 kN units per meter cubed. D. 40 kN units per meter cubed. 3, 2, 1. Answer B. Explanation. Normal concrete का unit weight 24 kN units per meter cubed.